Assalamu alaikum friends, today you are watching English Word. Now we discuss about the linguistics and its type. So first we discuss about the language. What is language? Language is the all around us. It is what enable us to communicate with other, express ideas and emotions and think of the world in different ways. All human language are made up of interactive layers of knowledge, structures, and meaning. The study of these is called linguistics. Means is called linguistics. Those who study language are called linguistics. Means who study the linguistic about who study languages. They are called linguistics. These professionals seek to better understand the nature of language, means they better know about the language, the nature of the language, how they come about, means introduction or origins of language, how they involve, how human acquire languages, the communicatives, and the difference between language and the variety of other things of value. Because of complex nature of language, the study of linguistics is divided into multiple branches. In this article, we take a brief look at the structures of language and the broad interdisciplinary branches of linguistics that anyone interested in the study of language need to know about. Means we discuss the linguistics branches now. Now, first of all, we discuss about the branches of linguistics. Due to the intricate structures of language and therefore reaching impacts, there are various subfields, dominants, and specialized branches of linguistics. Here are the main branches of linguistics with example. We have a first examples and first branch of linguistics is a psycholinguistic. What is a psycholinguistic? Psycholinguistics is amongst the most popular branch of linguistics, the study the relation between psychological process and linguistic behavior, means there is a study of psycho between means psychological process and linguistic behavior of language. An example of psycholinguistics is found in the study how human perceive language and why certain words have the capacity to trigger us emotionally more so than other words. Such branches of linguistics also seeks to understand how humans acquire the master language. Psycholinguistics often work with the child psychologists and the contact research on speech and linguistics and language developed to understand how humans perceive or produce language. Here we have a second branch of linguistics is the social linguistics. This is another one of those branch of linguistics that serves to crucial functions in our understanding and applications of linguistics because language is the deeply human and social construct. Social linguistics deal with the effects of different aspects of society ऑन अ लैंग्वेज मीन्स हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो सेकंड ब्रांच है आपको सोशल से पता तो चल गया कि सोशल लैंग्वेज जो सोशल उसमें यूज़ की जाती है तो इसमें हम ये बताया जाता है कि जैसे कि जो लैंग्वेज है वो इंसान के डीपली सोशल जो उनका बिहेवियर होता है या सोशल उनकी कन्वर्जेशन होती है उसमें कैसे इफ़ेक्ट करता है उसके इफ़ेक्ट सोसाइटी पे सोसाइटी की लैंग्वेज पे कैसे होते हैं तो इसमें ये बताया जाता है on top of that study the introductions of language as a people मतलब people की लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है कि उनकी उनकी इंटरेक्शन क्या है लैंग्वेज की लोगों की डिफरेंट कल्चर में एंड उनके जो जैसे कि मुख्तलिफ एक सोसाइटी में लोग होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी जो है हमारे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूरोप साइड चले जाएँ तो उसकी सिंपल होगी इंग्लिश पीपल की अलग होगी और जो एशियन पीपल है उनकी अलग होगी तो इसमें यही बताया जाता है कि सोशली लैंग्वेज कैसे चेंज होती है वन ऑफ द एग्जांपल्स of the social linguistics is the emergence of different dialects of the language as it's the study of language confluence such as Hindi and English being spoken together as English. There is a third example of linguistic applied linguistics.
Applied linguistics involve the practice use of linguistics to solve real life problems. मीन्स के अप्लाइड से आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर जब हम सोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो उसका फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम हल होती है, जो इशू होता है वो हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लैंग्विस्टिक अप्लाई करेंगे जहाँ भी हम रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी लैंग्विस्टिक में तो उसकी लैंग्वेजेस की तो वो सॉल्व हो जाएंगी। Applied linguistics involve the practice use of linguistics to solve real life problems. Linguistics may make us for other fields such as sociological, psychological, anthropological, etc. Is better understanding how to apply their study of linguistics to help people and solve real world concerns. It is best to understand such process of linguistics with example. Applied linguistics can seen in speech therapy, translating texts from different cultures or age, and even in the process of second language acquisition. Here we have a fourth branch of linguistics is the computational linguistics. This is the relatively new branch of linguistics, means this is a new branch that deal with the use of language by computer and program. This is about the language of computer. Such branch of linguistics leverages computer science to analyze, model, and produce speech. One of the examples of computational linguistics is the alt-driven Google assistants that use natural language process and speech recognition system to do your bidding. Here we have a fifth branch of linguistics, comparative linguistics. What is a comparative linguistics? As the name of suggestion, this branch is associated with identifying similarity and the difference between languages that have कॉमन ओरिजिन। मीन के जो भी लैंग्वेज है उसमें अगर कोई लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, उर्दू है, जो अरेबिक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लैंग्वेजेस हैं, कोई दो लैंग्वेजेस हैं, उनका ओरिजिन, उनका एक्सेंट, उनकी कुछ भी उनका जो सेम है, बोलने का तरीका सेम है, तो उसको हम कंपैरेटिव कहेंगे। फॉर इंस्टेंस रोमांस लैंग्वेज लाइक इटालियन, French and Spanish differ in speech and construction even though they are originated from Vulgars Latin from the Roman area। मीन्स कि देखिए ये डिफरेंट है, इनके बोलने का तरीका चलो ठीक है डिफरेंट है, लेकिन ये आई एक ही उससे हैं वल्गर लैटिन्स ऑफ द Roman era से आई हैं। Study in a comparative linguistics also includes studying distinct languages such as the Sanskrit and the German that are separate by the thousands of kilometers and years, but which nevertheless have structural and etymological similarity। मीन्स कि हम अभी अगर स्टडी कर रहे हैं जैसे संस्कृत और जर्मन है, अगर उसको हम सेपरेट करें, जैसे कि उनका ये है कि जो संस्कृत है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसके बाद जो जर्मन है अगर उससे हम देखा जाए तो वो कुछ इतनी पुरानी नहीं है जितनी संस्कृत है। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर आएगा, जो भी उनकी सिमिलरिटीज़ आएंगी, तो उसको हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे, उसको हम कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, या इस पे अप्लाई हो सकती है वाली कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक की ब्रांच। And we have a sixth branch of linguistic, historical linguistic, name से show रहा है, historical means history, about history। This is one of the more intrications branch of the linguistics। It study the evolutions of linguistics over a period of time and analyze the change that took place within them। One of the popular of the this branch is the examination of dead language। मतलब कि इसको जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल से शो हो रहा है कि जब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है और हिस्ट्री में जब आ जाते हैं, मीन्स कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन लोगों की पढ़ते हैं ना जो या उन चीज़ों के पढ़ते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स हिस्ट्री में वो होते हैं। तो इसी तरह कुछ कोई भी लैंग्वेज जो डेड हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, तो उसको हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी कहेंगे, और उसको उस पर ये हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक की ब्रांच अप्लाई होगी। जैसे कि सच एज लैटिन, मतलब लैटिन, संस्कृत, एशियन, ग्रीस सेक्ट्रा। एंड ये लैंग्वेजेस हिस्टोरिकल उसमें आती हैं लैंग्वेजेस में। एंड emergence of current languages them language from them। Historical language also enable us to construct early stage of language to understand how grammar, semantics, and
फोनेटिक्स कैन चेंज ओवर द टाइम मीन्स कि ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जैसे ये लैंग्वेजेस चेंज हो गई हैं, और इसमें जो कि लैंग्वेज की स्टेजेस थी, पहले ज़माने की जो लैंग्वेज है उसकी स्टेजेस थी वो कैसी थी, उनकी ग्रामर कैसी थी, उनकी सेमियोटिक कैसी थी, उनकी फोनेटिक्स कैसी थी, और कैसे वो टाइम के साथ चेंज हुए। तो ये हमें सारा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की जो ब्रांच है उसमें पता चलेगा कि कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या टाइम के साथ उनमें क्या चेंजेस आई थी जो वो ख़त्म हो गए, और उनकी लैंग्वेज और उनकी मतलब कि उनका सारा ओरिजिन हमें पता चल सकता है। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, ये हमारी सेवन्थ ब्रांच है। द सेवन्थ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज स्टाइलिस्टिक्स। दिस इज़ अ this is another one of the important branch of linguistics. It is an important branch of linguistics. It is the study and interpretations of styles and rhetorics as employed by the different author within a language. Mean के style पता चलता है language का कैसा है। Often times such interdisciplinary branch of linguistics include the study of literature, which lets us analyze symbolism, rhythm, dialogue, sentence structure, etc. मीन्स कि हमें राइम और उसकी रिथम, डायलॉग, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब उसमें आ जाता है कि वो कोई भी लैंग्वेज है वो कैसी है, उसका क्या स्टाइल है, मतलब कि वो किस तरीके से बोली जाती है, लहजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें इसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब अमेरिकन का एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश का अलग है, उनका स्टाइल बोलने का अलग है, अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिश का अलग और अमेरिकन का अलग। सो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है ये। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज यूज इन politics and advertising is very different from that the religious text and classical literature. The analysis of that comes with the domains of stylistics. सो इसमें हमें ये भी एग्जांपल मिलती है कि जैसे कि अगर लैंग्वेज है वो पॉलिटिशियन जो बोल रहे होते हैं, या हमें कोई भी एड्स आते हैं उसमें जो लैंग्वेज वो बहुत डिफरेंट होती है। और अगर हम देखा जाए तो रिलीजन जो टेक्स्ट होते हैं या क्लासिक लिटरेचर की लैंग्वेज होती है तो वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हम अगर स्टाइल देखें, ओल्ड इंग्लिश का स्टाइल चेंज है और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका चेंज है। तो थैंक यू। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी वीडियो मतलब कि लेक्चर के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।